Good morning, all of you. I hope audio and the slides are visible. So today is 10th of September. We'll discuss national international news. Okay. So before I start, let me tell you, in all StudyIQ courses, be it UPSC, State PSC, if you want to join optional, the price will go up after 12th of September. So if you want to join any of the courses, you can join. Okay. Good morning, Rajendra. Good morning. Thank you for the confirmation. So let's start today's session. Vice President, we have seen the 17th new Vice President of India. Nepal is in chaos, kind of a civil unrest in Nepal. Anti-conversion bill. We'll see the news from the Rajasthan. Good morning, Sangeeta. Urbanization, we'll see. This is from Kerala. Naga Council and Nicobar project. Nicobar project, we have already seen one editorial. So we'll further see the development. And malaria vaccine, which is indigenous in nature. First of all, the Vice President, Radhakrishnan elected as the Vice President of India. We'll see. Radhakrishnan won by a margin of 152 votes. 152 votes. That is, two contestants are there, Radhakrishnan and Muralidharan. So CP Radhakrishnan was the candidate from the NDA, and Justice Muralidharan, the former Justice Muralidharan, was the candidate from the NDA, joint opposition. So 152 votes margin, he won the election. The electoral college को अपन देखिए 245 Rajya Sabha seat and Lok Sabha 543. This is the strength of the full electoral college. Full electoral college हमें जानी चाहिए the members of both the houses. Okay. Unlike the president, president कौन हुए? Legislative Assembly रा members भी vote दिए होंगे. But in this case, only the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Okay. The present strength of the electoral college 239 कारण 6 vacant अच्छी and 542 Lok Sabha and number of ballots cast यदि अपन देखिए then total valid vote होची 72, 15 votes are invalid. And finally, CP Radhakrishnan got 452 and B. Sudarshan Reddy, the former justice, Sudarshan Reddy, former Chief Justice, that is 300. Okay. So Maharashtra Governor, Aguru se kaun thile? Maharashtra Governor CP Radhakrishnan elected as the 17th Vice President of India. Ita ko man rakhte 17th. M. Radhakrishnan, the ruling NDA alliance, got 452 first preferential votes. यहाँ भी सर्वे के डिस्कस करिबो व्हाट इज दिस फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट एंड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ही गॉट 300 वोट्स. नाउ इलेक्टोरल कॉलेज को देखिबा जदी वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज रे कोमन रहबे मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. State Legislative Assembly and Legislative Council do not participate. In fact, President election रे आपण Legislative Council रा members को देखिबे नहीं. Only the Legislative Assembly, elected members of the Legislative Assemblies मानो को ही आपण देखिबे. Elected members of the Legislative Assembly and elected members of the Rajya Sabha and Lok Sabha. That's it with respect to the presidential election. But in the Vice President, only the Lok Sabha and Rajya Sabha and all the members, be it nominated or be it elected. Okay. So both elected and nominated. ये difference को टिके देखी नेबे कारण Vice President election अच्छी एवं prelims रे माने question पचारिबे. इधर किसी doubt नहीं. Okay. Interview रे भी पचारुचंती Vice President रो electoral college कोंतु या केमती से माने elect होंती. Okay. Voting system देखिबा proportional representation. President रहो किंबा Vice President रहो voting system होची proportional representation and single transferable vote. प्रति व्यक्ति रो गोटिए vote and equal weightage. Okay. And secret ballot को आज होची obviously secret ballot के ही जानी परिवे नहीं. आगुरी भी कहते secret ballot हैला पर भी
बहुत थर जना पड़ जाए कि किए क्रॉस वोटिंग करिछि बोली ओके एक्जाक्टली जना तो पड़ जाए पार्टी लाइन रे बिकॉज व्हिप इज देयर टू लुक इनटू दिस मैटर्स व्हिप के ना व्हिप होची काइंड ऑफ क्लास रो मॉनिटर जे कि मेंबर्स मानकर डिसिप्लिन को मेंटेन करियो एंश्योर करियो कि ऑल मेंबर्स आर डिसिप्लिन्ड ओके एंड दे आर गोइंग विद द पार्टी लाइन सो दैट इज द जॉब ऑफ द व्हिप then whip has this what you call kind of information or kind of this data कि केते क्रॉस वोटिंग ହେଇଛି अदर पार्टीज को माने आम पार्टी रो वोट ଦେଇଛନ୍ତି ओके फाइन काउंटिंग ऑफ वोट्स यदि देखिबे आपण जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखुଛନ୍ତି दुईटी कैंडिडेट थिले टोटल तो दुईटी कैंडिडेट भितरु जो माने फर्स्ट प्रेफरेंस ଦେଇଥିବେ फर्स्ट प्रेफरेंस सपोज राधाकृष्णन को किसी लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस देती है ओबियसली द एनडीए फ्रंट एंड यूपीए फ्रंट या अपना जहाँ को कही पारे द कांग्रेस अलायंस वाले से मैंने जस्टिस सुदर्शन को देते फर्स्ट प्रेफरेंस तो प्रथम फर्स्ट प्रेफरेंस को काउंट करा इफ नो कैंडिडेट्स गेट्स मोर देन 50% ऑफ वोट्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस सब्सिक्वेंट प्रेफरेंस आर कंसिडर्ड अंटिल वन कैंडिडेट सिक्योर्स द रिक्वायर्ड कोटा तेणु आपने जानी आम जो इलेक्ट्राल प्रोसेस अच्छी गोटे हूँ फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पॉलिटी रे आपन पढ़ी थे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कौन जोटा कि आम असेंबली लोकसभा इलेक्शन में यूज करुचे सेठी 50% वोट दरकार नहीं बट हाईएस्ट वोट्स दरकार से गोटे पॉलिटिकल पार्टी इफ गेट्स 30% ऑफ द वोट या 35% ऑफ द वोट इफ दिस इज द हाईएस्ट वन तेबे से आपणकर जीति जाऊँगी यानी कि इलेक्शन जीतुचे बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है 50% रू अधिका वोट दरकार मेजोरिटी सो मेजोरिटी केस रे कौन हम फर्स्ट प्रेफरेंस को काउंट करागला सपोज किसी फर्स्ट प्रेफरेंस देते राधाकृष्णन को किसी फर्स्ट प्रेफरेंस देते सुदर्शन को ओके एंड जेहेतु फर्स्ट प्रेफरेंस आम देखिलु कि 50% क्रॉस करूनी तेणु से पुणी सेकेंड प्रेफरेंस को काउंट करेंगे कहार अधिका सेकेंड प्रेफरेंस अच्छी एंड देन द फाइनल कैंडिडेचर को विन या विक्ट्री बोली घोषणा करा दिस इज द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द वोट्स ओके प्रथम फर्स्ट प्रेफरेंस यदि फर्स्ट प्रेफरेंस 50% क्रॉस करीगला देन इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट इफ नॉट देन सेकेंड प्रेफरेंस विल बी गिवन कि एमान कहा को अधिका सेकेंड प्रेफरेंस दिया जाइए एंड वोट विल बी एडेड विथ द फर्स्ट प्रेफरेंस एंड देन द फाइनल जजमेंट वुड कम और फाइनल डिसीजन वुड कम ओके नेक्स्ट देखिए नेपाल इज इन chaos. Nepal's Prime Minister KP Sharma Oli resigned a day after 19 people were killed in police firing as Genji-led anti-corruption protest. So basically it was started with this idea कि social media को ban करा जाइथिला. There could be a possibility कि government was suspecting a kind of civil unrest. Government was suspecting a kind of civil war kind of situation or any such movement regarding the anti-corruption. So से deliberately they banned the social media and social media is considered as the freedom of speech and expression. तेणु से बहुत हुए जो मैंने young generation अच्छी Gen-Zs अच्छी basically they are active in the social media. They started protesting and finally it is considered as the anti-corruption movement. कारण आगुरु तो simply हमें कहते कि social media ban ହେଇଗଲା तो से movement होची. This is not the case. There are some structural flaws in the government because those people are sitting in the government. They are, I mean, यदि अपना जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को देखिए ना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो मैंने सरेंडर करूँ से मैंने कहूँ कौन ना फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज दोज कैडर दे आर गेटिंग लॉट ऑफ फंड मिलूची वेपन मिलूची एंड जो मैंने टॉप लेवल लीडर्स मैंने होचंदी दे आर लिविंग ए लग्जरियस लाइफ ओके तेणु सी जो मैंने ग्राउंड रे काम करूँ जो मैंने सिंपली माने सोल्जर्स से मानकर आपण कोई परिवे सोल्जर कैडर ऑफिसर कैडर नुहे टॉप लीडर्स कैडर नुहे से मानकर लाइफ इज मिजरेबल दे आर लिविंग इन द फॉरेस्ट दे आर लिविंग वेरी मिजरेबल लाइफ दे डू नॉट हैव एक्सेस टू बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बट दोज लीडर्स आर लिविंग ए लग्जरियस लाइफ इन फैक्ट दे आर इन फॉरेन कंट्रीज दे आर फॉरेन विजिट्स रे ही से रोचंदी डेलीगेशन हिसाब रे तेणु एक्जाक्टली द सेम थिंग यू कैन सी इन द नेपाल एज वेल द टॉप मोस्ट लीडर्स दे आर एंगेज्ड इन द what we call luxurious life
they are living a luxurious life without thinking the future of the country, okay, future of the generations. ତେଣୁ ये ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ये ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅନରେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ସିଭିଲ୍ war condition ହେଇସାରିଲାଣି. President Pudel accepted the resignation and urged all stakeholders, including the representatives of Gen Z, to engage in peaceful dialogue even as attacks and arson incidents continued to grip the capital. So completely ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଂଲାଦେଶ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା, ବାଂଲାଦେଶ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନେଇବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ନେପାଳ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଆସି ସାରିଲାଣି ଯେ ସିମିଲାର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି. ତେଣୁ ବାକି ଆଉ କେଉଁ ନେଇବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଅନରେଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ବାକି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ. ଲେଟ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଡେଫିନେଟଲି ଇଜ୍ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ନେଇବରହୁଡ୍ ପଲିସି. କାରଣ ସିଭିଲ୍ ଅନରେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେଇବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ. ନେପାଳରୁ ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ପପୁଲେସନ୍ या ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ହେବା डिफिकल्ट, बट जो मैंने बॉर्डरिंग एरियाज रे अच्छी दे विल डेफिनेटली ट्राई टू एंटर इन टू इंडिया. सो इनफिल्ट्रेशन इज द पॉसिबिलिटी जोटा कि बांग्लादेश रे आम विक्टिम अच्छु इन केस ऑफ इनफिल्ट्रेशन. सिमिलर काइंड ऑफ इनफिल्ट्रेशन आप नेपाल केस रे भी देखिपारे. ओके, तो ये डेफिनेटली इज ए चैलेंज एंड इट्स ए सिक्योरिटी थ्रेट एज वेल, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टिंग दिस मूवमेंट, what kind of support they are giving in terms of arms, ammunitions, in terms of money. So you never know. So security threat is a concern with respect to India as well. Okay, so we'll see in future kemti situation unfold hoji, we'll discuss that as well. Okay, recently ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ନାରୀ ସର୍ଭେ ଆସିଥିଲା, ନାରୀ ସର୍ଭେ by the National Commission for Women, and the survey was National Annual Report and Index on Women's Safety को लेके. And Bhubaneswar fairly did well in that survey, one of the safest city for the women एटा को consider करा जाइथिला. But this article is about the national capital Delhi विषय रे discuss करा जाउची. Okay, so according to the National Annual Report and Index on Women's Safety Nari 2025, poorly lit streets, that means poor lighting facilities, there are no lights. Okay, unsafe transport, जो public transportation आपण देखुचंदी they are unsafe. Okay, lack of secure public spaces and limited emergency services in the sense, for example, Sasmita, I can't do with that advertisement because it's a problem with the YouTube. Okay, so they are only doing that. Okay, limited emergency services, for example, the way police responds to a complaint, so that is limited emergency services. So Delhi रे जदि rank देखिबे in terms of women safety index, it is 28th. You can just imagine the situation, केते cities अछि हम country रे, and 28th rank रे Delhi अछि. Adding to the report, 31% of women in Delhi said women-friendly infrastructure was either minimal or non-existence. Women-friendly infrastructure, for example, आपण देखिबे जमती एबे हमें कौन करचु सिंपली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करिछु. जमती दिल्ली मेट्रो रे द फर्स्ट बर्थ जोटा अछि मेट्रो रो, दैट इज रिजर्व फॉर द वुमेन. बट स्टिल सेठी आपण देखिबे जेतोले रश आर रे by taking the situation or like male member भी सेठी पसी जाउछंदी से बर्थ रे भी ट्रैवल करूछन. So although fine अच्छी security staffs are there, but still you can't ensure all time this thing. अपना public transportation देखंतु, after this 2012 Nirvaya case, a women escort has been deployed in the public bus, completely CCTV tracked buses, GPS tracked buses, but still अपन सेठी eve teasing भी होची, and there are जो bad touch वाला जिनस होची, there are multiple such things जो थी पाएं कि unsafe feel करूचंदी, and police response is not that women friendly. In Delhi, 41% of women said deserted spaces made them feel unsafe. जोटी लोको नथिबे राति रे
light properly नथिबो, CCTV cameras नथिबो. So that is the reason while unlit areas, high crime rates, public behavior were also cited as the reasons for fear. The contrast between daytime and nighttime and daytime safety was sharp. The daytime was fine, 8% felt the unsafe, but the number jumped to 35 during the dark or night time रे आपण देखिबे 35% women कहउछंती कि unsafe. National capital recorded a higher incidence of harassment in public spaces. Public spaces रे भी आपण को continuously high percentage of harassment देखिबो को मिलिबो. While 7% of women across the country reported experiencing harassment, in Delhi figure was 12%. यदि आपण all over the country देखिबे 7%, but Delhi रे देखिबे 12%. Okay, when asked for the solutions, 51% of the women demanded more policing. Obviously, more policing, security staff, and simply आपण देखिबे वर्तमान कोन होची women help desk establish करा जाउची police station रे. 17% specially called for the timely and proper police action. The survey launched by the National Commission for the Women, okay, last month covered 12,770 women across 31 cities. तो ये NCW रो सर्वे थिला जोटा कि ये डेटा अपन को दउची. ओके, देखो जो पेपर 4 जीएस पेपर 4 रो आपनकर केस स्टडी अछि ना, केस स्टडीज रे कोहा जाई पारे कि सपोज आपण गोटे अथॉरिटी आपण पाखे अच्छी डिस्ट्रिक्ट एसपी आपण अच्छी या डीएसपी अच्छी आपण कौ भाई भाव में वुमेन सेफ्टी को इनश्योर करेंगे, व्हाट आर दोज पैरामीटर्स. तेणु से जिनस आप लिखिपारे आम लीड सिस्टम या लाइट सिस्टम प्रॉपरली करवा, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवा. वी नीड टू हैव वुमेन एस्कॉर्ट्स इन द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ओके, वी हैव दिस पुलिस रिस्पॉन्स, प्रॉपर रिस्पॉन्स टीम रहिबा दरकार. ता सहित आप कहीपर कि वुमेन हेल्प डेस्क रहिबा दरकार इन द पुलिस. तो ये किसी मेजर्स पैरामीटर्स आप स्टेप्स नहीं पारे टू एंश्योर द वुमेन सेफ्टी. एंटी कन्वर्जन बिल, राजस्थान असेंबली passes the anti conversion bill with stiff penalties. Okay, the Rajasthan Assembly on Tuesday, that means yesterday, passed a bill to prevent religious conversion. A religious conversion is a state matter. तेणु रिलीजियस कन्वर्जन को लेकिन स्टेट्स निज निजर लॉ फ्रेम करुछन. अच्छा, ये जो कन्वर्जन होची अगेंस्ट फोर्स, फ्रॉड, अल्यूरमेंट एंड कोअर्सन, पनिशेबल विथ स्टीप पेनाल्टीज इंक्लूडिंग द लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ये सब जिनस आपको देखा मिले जदि फोर्सफुली होची, फ्रॉडुलेंटली होची, अल्यूरमेंट या कोअर्सन जबरदस्ती होची, एंड देन पनिशेबल विथ स्टीप पेनाल्टीज इंक्लूडिंग द लाइफ इम्प्रिजनमेंट. बट एग्जेम्प्ट क्या करा एंसेस्ट्रल रिलीजियन को. एंसेस्ट्रल रिलीजियन होची कहीं एंसेस्ट्रल रिलीजियन मुझे को कहबी ना, जनरली आम जाचु अदर देन द हिंदू रिलीजियन बाकी सब रिलीजियन आमर आसी कौटी इंडिया को आसी, बट हिंदू रिलीजियन ओरिजिन होची इंडिया रे. इफ एनी सच अदर देन द हिंदू रिलीजियन, इफ ए पर्सन वांट्स टू कम बैक टू द एंसेस्ट्रल रिलीजियन दैट इज द हिंदू, तेणु से केस रे आम एग्जाम्प्ट करूँ. से केस रे हमें कौन प्रकार स्टेप्स नबू ना. ओके, दैट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड व्हाई तो एंसेस्ट्रल रिलीजन होची आपनकर हिंदू रिलीजन आम कहूँ. ओके, फाइन. द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025 कंटेन्स प्रोविजन फॉर देखो कौन कौन पनिशमेंट रखाई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स अप टू 1 crore rupees, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी or demolition of properties etc. with respect to the mass conversion takes place. Suppose कौन सी एक religious places थी वो जोटी के mass conversion हो जी तो से place को demolish कर दिया जीवो. Rajasthan High Court issued guidelines in 2017 to prevent forcible conversion. आगुरु भी हमें थोड़ा discuss करे थे with respect to उत्तराखंड. फोर्सिबल कन्वर्जन या कन्वर्जन को नहीं कि गोटे काफ़ी गोटे थिन लाइन डिफरेंस अच्छी, द मार्जिनल डिफरेंस अच्छी. यू कांट आइडेंटिफाई कि कोटा फोर्सफुल कन्वर्जन और कोटा विलफुल कन्वर्जन. देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस. बट ऑब्वियसली आम कहूचे कौन ना कोअर्सन फोर्सफुली जदि होइतिबो, इवन अगेन इट डिपेंड्स ऑन प्योरली द पर्सन हु इज कन्वर्टिंग टू अनदर रिलीजन.
जदि से पर्सन तार विलफुल करुची वॉलंटरली करुची देन देयर इज नो प्रॉब्लम विथ दैट से आम मास कन्वर्सन को रखिले मैंने गोटे जगह 10टा लोक 15टा लोक एमती गैदरिंग करके जदि करा जाउची तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज द मास कन्वर्जन देन प्रॉपर एक्शन विल बी टेकन राइट। अच्छा ये जो प्रायर इनफॉरमेशन किए दब क्या रखा जाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड पब्लिक डिस्प्ले ऑफ द इंटेंट तो ये भी गोटे जिनस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पाखे प्रायर इनफॉरमेशन जदि थी तेबे आपणकर कन्वर्जन को करा जाई पारिबो। ओके एमती लिखाई मैंडेटिंग दैट कन्वर्जन इज ओनली पॉसिबल फॉर एडल्ट्स एंड रिक्वायर्स प्रायर इनफॉरमेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड पब्लिक डिस्प्ले ऑफ द इंटेंट आप क्लीयरली कहे ना वॉलंटरली एति लोक कन्वर्ट हवा चाहूँ जदि आप कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर देखिए तेज रिलीजियस फ्रीडम को आम प्रोटेक्शन दौचे रिलीजियस फ्रीडम कवर्स 25 to 28 आर्टिकल से कौन कौन ना फंडामेंटल राइट एगुड़िक कौन ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन जेकोसी रिलीजन को आम चाहिए ताकू आम अडप्ट करें आम प्रैक्टिस करें आम प्रोफेस करें यानी कि आम प्रोफेशन हिसाब से यूज करें एंड प्रोपागेट देयर बिलीव्स विदाउट इंटरफेरेंस आम क्या रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट न करी आम कौन जगार इंटरवीन न करी जदि आम आम रिलीजन को प्रोपागेट करुचे प्रोफेस करुचे ताको आम प्रमोट करुचे देन इज नो हार्म इन इट। ओके नेक्स्ट देखा अर्बनाइजेशन देखो ये जो अर्बनाइजेशन आर्टिकल टी अच्छी दैट इज लेसन फॉर इंडिया नाउ केरला इज टैकलिंग हाउ केरला इज टैकलिंग द रैपिड अर्बनाइजेशन को लेकिन सब बेले गोटे न्यूज़ या आप कहींपर अर्बनाइजेशन अर्बन एरिया प्रॉब्लम को लेकिन सब बेले आपन को क्वेश्चन देखा मिले खास करके मेन्स रे एसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आसीपे तेणु अर्बनाइजेशन ओवरऑल जदि आप देखिए इंडिया रो एवरेज अर्बनाइजेशन हूँ 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दे आर लिविंग इन द अर्बन एरिया सो वी हैव अर्बन एरिया रे चैलेंजेस अच्छी विथ रिस्पेक्ट टू sanitation, congestion, traffic issue, etc. So let's see how the states are doing with their respective states और स्पेसिफिकली जो आर्टिकल टी अच्छी केरला रू आम किसी मॉडल को अडप्ट करि परिबा गोटे केरला अर्बन पॉलिसी कमिशन फॉर्म करा जाइतला डिसेंबर 2023 रे ये हूँ फर्स्ट सच स्टेट लेवल अर्बन प्लानिंग बॉडी क्रिएटिंग ए 25-year रोड मैप से 25-year रोड मैप गोटे दी क्या केरला गवर्नमेंट को कि व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अर्बनाइजेशन तेणु बाय मार्च 2025 रे से सबमिट कले गोटे रिपोर्ट एंड दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग केरलाज यूनिक अर्बन लैंडस्केप इनटू क्लाइमेट अवेयर इंक्लूसिव फाइनेंशियली एम्पावर्ड इकोसिस्टम सो दिस इज व्हाट द essence of the report which was submitted by the Kerala Urban Policy Commission. The commission addressed accelerating urbanization threat like flood, coastal erosion, proposed solutions such as climate risk, aware June, real-time data, observation, green fee, parametric insurance, municipal bond, city cabinets led by the elected mayors. ये जो केतेटा फैक्टर्स गुड़िक अच्छे मुझे सहित डिस्कस करी आप देखिए भुवनेश्वर मेयर को डायरेक्टली इलेक्ट करा से देखिए मेयर टी लेवल भी टी बढ़ी मेयर इज इनवॉल्व इन द विथ द पीपल अमंग द पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करा मेयर डायरेक्ट इलेक्शन चली आम कंट्री रे मेयर को लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं इनफैक्ट ओडिशा रे तो नथिला ओके डायरेक्ट मेयर इलेक्शन को बहुत गुड़े कमिटी कमिशन रिकमेंड करिसेंती टू मेक ए बेटर अर्बन लोकल बॉडी कहीं कहुच्छी ना इफ मेयर वुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल देन मेयर वुड हैव अथॉरिटी मेयर वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल अकाउंटेबल टू द पीपल सो देयर वुड बी ए बेटर गवर्नेंस इन द अर्बन लोकल बॉडीज जदि मेयर डायरेक्टली इलेक्टेड नुहे मेयर हूँ सिलेक्टेड तेज ओबियसली से अकाउंटेबिलिटी रहिबो नाही हाउएवर वी हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस but municipal corporations are the administrative unit they are not what you call directly connected with the people but mayor could be directly connected with the people so time and again it has been recommended by different committees
कि मेयर रो डायरेक्ट इलेक्शन करा जाऊ which was implemented in भुवनेश्वर मेयर as well the last जो आपनकर अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन रे मेयर को डायरेक्ट इलेक्ट करा जाइतला। सेकेंड जिनस हूँ आपन देखंतु ये जो पर्टिकुलर कमिशन टी अच्छी से रेकमेंड करिछि म्युनिसिपल बॉन्ड म्युनिसिपालिटी अथॉरिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो काउंसिल हो they do not have enough money with respect to what we call the infrastructural development or those provide basic essential services. So what this commission is recommending कि to get their access to the finance or they should have more financial packages या अधिका फंड पाई what they can do से माने म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करि परिबे मुनि बॉन्ड जहाँ को हमें कहूचे मुनि बॉन्ड इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे कैन रेज मनी फ्रॉम द मार्केट कारण जो मैंने मुनि बॉन्ड रे इन्वेस्ट करने को चाहिए से मैंने इन्वेस्ट करेंगे एंड मनी विल बी विद द म्युनिसिपल अथॉरिटी एंड दे विल स्पेंड मनी इन दोज डिफरेंट infrastructural development and all. And risk aware zoning in the sense there are places which are vulnerable inside the urban place, okay, in terms of low lying areas ही परे, in terms of waste जिनस ही परे, so there are multiple such zones. तेणु से जिनस को भी आपण कौन करेंगे ताकू demarcate करेंगे and obviously not to human habitation यानी कि आप एनकरेज करेंगे भाई जेहेतु एटा लो लाइंग एरियाज कुड बी अ चांस ऑफ अर्बन फ्लडिंग कुड बी अ चांस ऑफ कोस्टल इरोजन सो बेटर टू लीव दिस प्लेस एंड वी विल नॉट हैव ह्यूमन हैबिटेशन इन दैट एरिया। तेणु यही टाइप्र किसी पैरामीटर्स आम कहीपर रेकमेंडेशन वी कैन मेड with respect to the better urban governance. It emphasized leveraging local stories from fisher folk to vendors, structured data, enabling a feedback loop between citizens' experiences and policy making. If you see the practical operations at the ground level, you will see citizens have been given an application through which they can give the feedback. They can monitor the exercises of the authority because no city can be developed with unidimensional condition आपण कहीपर केवल यदि म्युनिसिपालिटी चाहिए that is not the case. Citizens must participate equally, that means all stakeholders must participate equally and make the system accountable or make the system जोटा कि प्रॉपर मैनेजमेंट पाई तेणु से फीडबैक मेकानिज्म को भी डेवलप करा रियल टाइम मॉनिटरिंग को करा सपोज आप देखिए विंटर जो आसो सरकार कहे कि जो जगार जदि किसी वेस्ट मटेरियल जला जाऊँगी इमिडिएटली आप इनफॉर्म करेंगे एप्लिकेशन में कहीं कहुच्छी रियल टाइम मॉनिटरिंग पाई कारण विंटर जेहेतु पॉल्यूशन कंटेंट अधिका थाए वी जनरली अवॉइड द बर्निंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल बिकॉज हाई प्रेशर थाए जिते पॉल्यूटेंट्स गुड़िक अच्छी देयर दोज पॉल्यूटेंट्स विल बी एट द सरफेस ऑफ द ग्राउंड सरफेस रे रहिबो तेणु से वी ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ पॉल्यूशन एंड ऑल ओके। शुभदर्शी नायक न्यूज पेपर कहूँ 17 आपड़ भी थोड़ा कन्फर्म करनी 17 कहते न्यूज पेपर ओके। नाउ दिस KUPC's approach is distinctive in embedding climate action into every aspect of urban planning, fostering local financial autonomy, shifting governance toward youth-led, citizen-centric system. तेणु पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को जदि आप देखिए से आपंकर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो अच्छी रूरल हो अर्बन हो से सब बड़ प्रॉब्लम हूँ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट दे हैव नॉट इनफ फंड तेणु फाइनेंशियली से केमती सेल्फ सफिशिएंट करवा ये गोटे बड़ चैलेंज एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हवा दरकार यूथ लेड गवर्नेंस हवा दरकार यूथ मानकर पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। Kerala's model offers actionable lessons for other states as well, seeking sustainable and adaptive urban transformation rooted in both science and community insight. तेणु केरलार जो मॉडल अच्छी दैट कैन बी रेप्लिकेटेड इन अदर स्टेट्स एज वेल। आपको ओडिशा कंटेक्स्ट रे किछि कहबी ओडिशा कंटेक्स्ट आप देखिए ओडिशा रे हमें रिसेंटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कौन कले किछि एरिया को नोटिफाइड एरिया काउंसिल रे काउंट कले किछि एरिया को नगर पंचायत भाव में इनक्लूड करागला एवं पुरी को आप देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हिसाब से ऐड करागला। पुरी रे कौन 10 लाख लोक अच्छा इफ यू सी ये जो एरिया गुड़िक ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन आम करुचे डू यू थिंक दैट पुरी हैज 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन दैट्स व्हाई सेठी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अच्छी ओबियसली नॉट। तो से माने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केमती कले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कले
कहीं ना जो पाखापाखी एरिया गुड़िक अच्छी रिजन गुड़िक थिला से गुड़िक ऐड करके इनक्लूड करके पॉपुलेशन को 10 लाख अराउंड करागला एवं ताको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोली दियागला स्टेटस। सेमती नोटिफाइड एरिया काउंसिल नगर पंचायत रे भी एक्जाक्टली दे डिड द सेम थिंग, किसी किसी एरिया को कवर करके ताको नोटिफाइड एरिया काउंसिल या नगर पंचायत रो स्टेटस दिया जाउची। एठी क्वेश्चन होउची काहेकि एमती करा जाउची, द रीजन होउची अर्बनाइजेशन को इंक्रीज करबा पई। अर्बनाइजेशन को इथिपाई आम इनक्रिज करने को चाहूँ ना, अर्बन एरियाज आर कंसिडर्ड एज इंजिन ऑफ ग्रोथ, इंजिन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इनफैक्ट। कारण अर्बन एरिया जिते आपंकर ग्रो कर आप सर अर्बन एरिया से चैलेंजेस भी तो आसो, तो ओबियसली चैलेंजेस आर देयर, बट वी नीड दैट स्मार्ट अर्बन इनिशिएटिव, वी नीड दैट स्मार्ट सिटीज। ओके, तेणु अर्बन चैलेंजेस ये होची अनऑर्गेनाइज्ड भाव में ग्रो करुच्ची। जदि आम ऑर्गेनाइज्ड भाव में ग्रो करवा डेफिनेटली से आम असेट हम रादर दैन द लाइबिलिटी। ओके, तेणु ओडिशा रे को भली भाव आम अर्बनाइजेशन को क्रिएट करि परिबा चेष्टा करिवे ता ऊपर क्वेश्चन आंसर लिखिबा पई। ओके, किछि पॉइंट्स तो आपण हाइलाइट करि परिबे। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नागा काउंसिल देखिबा। गुड्स मूवमेंट अफेक्टेड as Manipur's Naga Council imposes trade embargo. Okay, United Naga Council, the apex body representing Nagas in Manipur, imposed a trade embargo from midnight on Monday, affecting the movements of goods carrying vehicles in Naga dominated hilly areas to operate hilly areas of the state, while shops and local businesses were allowed to operate. Commercial trucks and non-passenger vehicles were stranded on major routes including the National Highway 2. So United Naga Council जोटा आपनकर मणिपुर रे आपनकर अछन नागाज जो माने अछंदी से माने गोटे ट्रेड एम्बार्गो इंपोज करिसेंदी। ट्रेड एम्बार्गो माने नो ट्रेड, देयर इज नो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। ओके, ये जिनस देखिबा को मिलुची। अच्छा, रीजन्स फॉर एम्बार्गो देखो, द एम्बार्गो इज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिसीजन टू फेंस इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर। आम बॉर्डर फेंसिंग करुचे, कहीं फेंसिंग करुचे ना इनफिल्ट्रेशन को रोकिबा पाई, इनफिल्ट्रेशन को बंद करबा पाई। इट ऑल्सो अपोजेस स्क्रैपिंग ऑफ द फ्री मूवमेंट रेजिम। तेणु आगु आम देखो नेपाल आउ इंडिया पोरस बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश पोरस बॉर्डर, इंडिया म्यांमार पोरस बॉर्डर। पोरस बॉर्डर रे बेनिफिट अच्छी, बेनिफिट कौन होची ना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इजिली कैन बी डन। जो मैंने से एरिया लोकल पीपल अच्छे दे कैन हैव ए गुड रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेड इकोनॉमिक ये सब जिनस, बट तार नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत अच्छी। नेगेटिव इम्पैक्ट कौन? नेगेटिव इम्पैक्ट होची फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए जो इनफिल्ट्रेशन होची, माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन। सेकेंड होची आपनकर ड्रग्स आपनकर ट्रेड होची, काउंटरफिट मनी आसुची, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट या इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट होची। सो देयर आर मल्टीपल सच इश्यूज इफ वी विल हैव द पोरस बॉर्डर। तेणु आम चाहूँ विल हैव ए स्ट्रॉन्ग फेंस बॉर्डर टू प्रोटेक्ट आवर मदरलैंड और प्रोटेक्ट आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। बट नागा काउंसिल को अपोज करिछि से माने गोटे ट्रेड एम्बार्गो इंपोज करिसेंती, which currently allows cross-border travel for communities within the 10 km of the boundary without documentation. तेणु बिना डॉक्यूमेंट रे आपण 10 किलोमीटर बाउंड्री भितर ऑपरेट करि पारुथिले, जोटा को बर्तमान आम ट्रावेल बैन कर दीजिए, फ्री मूवमेंट को बंद कर दीजिए। द यूनाइटेड नागा काउंसिल आर्ग्यूज द फेंसिंग विल डिसरप्ट ethnic and familial ties between the Nagas on both the sides of the border. The UNC demands that any project affecting the Naga homeland should have free, prior and informed consent from the affected communities. सेवन कथा हूँ एमती अनोनिमसली गवर्नमेंट डिसीजन नहीं पारिबो नाही, वी मस्ट बी कंसल्टेड and we must be taken into consideration because we are also stakeholder of this. Talks between Union government and UNC officials on August 26 over fencing and FMR ended inconclusively कारण से राजी हेले नहीं कि आम कौन प्रकार फ्री मूवमेंट रेजिम को नहीं कि से माने कॉम्प्रोमाइज करने को चाहूँ। द ट्रेड एम्बार्गो इज बीइंग डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट। तेणु से माने ट्रेड एम्बार्गो यानी कि नॉन ट्रेड या नॉन कोऑपरेशन हिसाब से इटा को इंपोज कले।
पैरेलल डेवलपमेंट जदि आप देखिए मणिपुर रे कुकी ग्रुप्स रिपोर्टेडली इंटरसेप्टेड एज द बस इन उखरुल डिस्ट्रिक्ट, frisked passengers, seized mobile phones, and fired blank rounds, drawing condemnation from other local organizations like Thodu Inpi Manipur, Saglomang Area Naga Students Association. तेणु ये पैरेलल डेवलपमेंट भी आप देखिए मणिपुर ये सब रीजन में चली एनीवे तो नागा काउंसिल को लेकिन आगू कौन नेगोशिएशन हम सरकार कौन डिसीजन नौकरी रिगार्डिंग द इंटरनल ये आप इंटरनल सिक्योरिटी आप यूज करें लिखिपारे. Moving to the Nicobar project, Union government seeks factual report on forest rights complaints concerning Nicobar project. The Union government has asked Andaman Nicobar Island administration for factual report following a complaint by the Tribal Council of Little and Great Nicobar. The complaint alleges that forest rights under the Forest Rights Act 2006 were not settled before diverting around 13,000 hectares of forest land for the 81,000 crore Great Nicobar Island project in August 2022. So basically what is happening, एक तो जो ग्रेट निकोबर आपंकर अच्छी से ट्राइबल पीपल डोमिनेटेड एरिया आम जाचु अंडमान निकोबर से बर्तमान मल्टी क्रोर्स प्रोजेक्ट्स जाऊँगी देयर इज ए पॉसिबिलिटी डिस्प्लेसमेंट हबार आम देखा पाइबा. अच्छा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हूँ 2006 रे आपंकर आसीला. फॉरेस्ट राइट्स एक्ट रे कहुच्छे सबू ट्राइबल कम्युनिटीज मानकर गोटे ट्राइबल काउंसिल रहिबो, यानी कि जोटा आम ग्राम सभा बोली कहबा. से ग्राम सभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू टेक डिसीजन विथ रेस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दैट रीजन. कोभली भाव में वेटलैंड से मानकर यूज कराहब, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कोभली भाव में यूज करा जिवो, दे आर द रियल अथॉरिटी. बट इन रिसेंट टाइम आम देखीचे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करा जाऊ नाही एवं विदाउट द कंसेंट ऑफ द ट्राइबल काउंसिल और विदाउट द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा दोज लैंड्स हैव बीन डाइवर्टेड फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर्पसेस. ओके, तेणु ये गोटे जिनस आमको देखा मिलूँ. सो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देखा कौन चैलेंजेस रही. द एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफाइड दैट ऑल राइट्स अंडर FRA हैड बीन आइडेंटिफाइड एंड सेटल्ड बिफोर डाइवर्टिंग द फॉरेस्ट लैंड. But the tribal council claims this is untrue. So the administration kuch bhai due process we have followed, but tribal council denying that. Contradiction in reporting. The certificate contradicts monthly progress reports submitted by the administration to the ministry, which claim the FRA need not be implemented as tribal rights were protected under another law, the Protection and Aboriginal Tribes Act 1956. Okay. तेणु कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्टिंग इन द सेंस रिपोर्ट जोटा सबमिट करा यूनियन गवर्नमेंट को सी कहूँ एवरीथिंग इज एज पर द लॉ, एवरीथिंग इज फॉलोड एज पर द ड्यू प्रोसेस, बट ट्राइबल पीपल आर डिनाइंग द फैक्ट कि आमको कौन कंसल्ट करा ना आमको कौन कंपेनसेसन दि जाइए ना आमको कौन रिहाबिलिटेशन दि जाइए ना आम सहित कंसल्टेशन करा जाइए. सो से जिनस लैक ऑफ कंसल्टेशन भी गोटे प्रॉब्लम. Concerns about the tribal rights. The Tribal Council insists that Forest Rights Act process, identification and settlement of forest rights have not even begun despite claims to the contrary. तेणु कौन प्रकार रिसेटलमेंट करवा, आइडेंटिफिकेशन करवा फॉरेस्ट एरिया से भाई कौन ही नहीं, कारण आम चेष्टा करवा कौन ना से ट्राइबल मानक सेठू आपण को केवल तो डिस्प्लेस करें ना से रिहाबिलिटेट करने को पड़ो गोटे सेम काइंड ऑफ फॉरेस्ट एरिया रे, कारण दे आर डिपेंडिंग ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर लिविंग. गवर्नमेंट एक्शन देखो, यूनियन Ministry of Tribal Affairs has asked for a detailed report. In fact, Joel Oram जो ओडिशा रो अछंदी से मध्य taking the stock of the situation. Wider implication जदि आपण देखिबे तो definitely tribal rights have been ignored, their development have been ignored. Infrastructure development versus जोटा में environment versus economy हमें कहूँ ना, so actually this thing is going on, and consultation process and legal compliance जो अच्छे हमारा, that simply there is a lot of gap and that has been exposed by this Nicobar project. कि हमें only we are focusing on the economic activities, ignoring this indigenous tribes and their rights over the forest areas. Okay. Next देखिए malaria vaccine.
Center grants license to the 5 firms to manufacture its first indigenous malaria vaccine. The union government has granted license to the 5 firms for the manufacture and commercialization of first indigenous multi-stage malaria vaccine developed by the Indian Council of Medical Research. Vaccine detail: the vaccine named Adfalki-Vax, the recombinant ceramic multi-stage malaria vaccine targeting the Plasmodium falciparum parasite. It works by blocking the parasite before it enters the bloodstream, thereby preventing infection and reducing transmission. The vaccine is affordable, stable, and scalable. It remains effective for more than 9 months at room temperature, aiding easier distribution without strict cold chain requirements. So this is another great feature of this vaccine. So easily can be distributed, and malaria जो गोटे problem हम देशर अच्छी lot of people dying every year सेठू आम vaccination drive करि परिबे. Firms license for production: Coco Farm देखो Indian Immunologist, Tech Invention Life Care, Panacea Biotech, Biological Limited, Zydus Life Sciences. Technology transfer: the ICMR invited expressions of interest from companies for transfer of technology to support vaccine commercialization. The technology was validated in collaboration with ICMR, National Institute of Malaria Research, National Institute of Immunology, New Delhi. So these are the 2 institutes जो मैंने technology collaboration करूँचंदी to develop the vaccine. Okay, importance कौन? एक तो self reliance, first indigenous vaccine एटा मन रखते हुए, first indigenous vaccine. Accessibility, room temperature अच्छी, so anyone can access. It has a shelf life. हमको special cold chain develop करिबा को पड़ियो नहीं, which can increase the cost. Affordability and accessibility, aligns with the goal of making healthcare accessible and reducing disease burden. This initiative strengthens India's fight against malaria and supports global health goals. MCQs देखिए, what voting method is used to elect the Vice President of India? Proportional representation by single transferable vote. So B is the answer. The recent protest in Nepal escalated due to basically increase in fuel prices कही परिबे, misgovernance कही परिबे, corruption कही परिबे. Okay, fine. A कही परिबे answer. What is the major concern of the United Naga Council regarding fencing of India-Myanmar border? That is loss of ethnic and familiar ties across the border. The Great Nicobar project has been criticized because it diverts forest land without settling the tribal rights under the Forest Rights Act. Okay. So that's it. जो मैंने हमारा क्रास कोर्स जॉइन करने को चाहूँगी 8 तारिख रू आपनकर क्रास कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी दे कैन जॉइन एंड जो मैंने फाउंडेशन कोर्स भी जॉइन करने को चाहूँगी कोड यूज करेंगे JN लाइफ एवं आपनकर 12 तारिख पर प्राइस हाइक हो तो जी प्राइस रे भी मिलूँ आप 10,000 रे ही मिल जाऊँगी फाउंडेशन कोर्स जदि आप चाहूँगी जॉइन करने जॉइन करेंगे अदरवाइज प्राइस विल इनक्रीज. ओके, PDF आपको ये टेलीग्राम रे मिल जाव. फाइन, thank you everyone and join before the price hike. Thank you.